हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको अपने यूट्यूब चैनल iTech वर्ल्ड में खुशामदीद। आज की वीडियो उन तमाम दोस्तों के लिए बहुत ही अहम होने जा रही है जो कि एक लेटेस्ट और ऑथेंटिक ऐसे रेटिंग वेबसाइट पे अकाउंट क्रिएट करके बहुत ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वेबसाइट का नाम है एडुडॉर्म। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस पे इसमें अकाउंट कैसे क्रिएट करना ये सिखाया, साइन अप का पूरा प्रोसेस आपको समझाया है। फिर 3 कंसेक्टिव वीडियोस में मैंने इसके आंसर्स प्रोवाइड किए हैं और आज की इस लाइव सेशन में मैं आपको इसके टेस्ट पास करके दिखाऊंगा। आज की वीडियो वॉच करने के बाद आप भी उन तमाम दोस्तों की तरह जो पहले अपना अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं, आप भी बड़ी आसानी के साथ इस वेबसाइट पर अकाउंट क्रिएट करके अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आप इस वीडियो को थॉरली वॉच करें, ओके? क्योंकि इसमें अगर आप एक भी मिस्टेक करोगे तो आपका अकाउंट क्रिएट नहीं हो पाएगा। इसमें 100% एक्यूरेसी रिक्वायर्ड है। तो इस पर अकाउंट क्रिएट करना कदरे ईजी है क्योंकि ये एक न्यू वेबसाइट है और इस पर अभी तक बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। आप इस गोल्डन चांस से भरपूर फ़ायदा उठाएं और आज इस सिलसिले की ये लास्ट वीडियो है। इस वीडियो को वॉच करने के बाद आप भी 100% एक्यूरेसी से अपना टेस्ट पास कर सकते हैं, ओके? इसमें फर्स्ट स्टेज में इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है जो कि आप यकीनन पास कर लोगे, बशर्ते कि आप प्रीवियस वीडियोस को भी थॉरली वॉच करके तैयारी करते हो। और सेकंड फेज पे आपने 30 मिनट्स में एक शॉर्ट सा ऐसे लिखना है जो कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ऐसे राइटिंग वाले प्लेलिस्ट में आप ऐसे कैसे राइट करना है उन तमाम 2 या 3 वीडियोस हैं उनको वॉच करें। फिर आप उस टेक्निक को फॉलो करते थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, फिर आप उस सेगमेंट की तरफ जाएं। वो टेस्ट भी आप बड़ी आसानी के साथ पास करके अपना अकाउंट क्रिएट कर पाओगे, ओके? तो चलते हैं टेस्ट की तरफ। तो अब हम टेस्ट की तरफ चलते हैं। याद रहे इस टेस्ट में 20 एमसीक्यूज होंगे और आपको 20 मिनट्स में इसको सॉल्व करना है। एक भी अगर मिस्टेक होगी तो आपका अकाउंट वहीं पे ब्लॉक हो जाएगा। इसमें 100% एक्यूरेसी रिक्वायर्ड होती है। आप इस टेस्ट को प्रॉपरली इस वीडियो को वॉच करने के बाद टेस्ट की तरफ जाएं। बल्कि मैंने कुछ प्रीवियस वीडियोस में एमसीक्यूज प्रोवाइड किए, उनके आंसर्स आप उन वीडियोस को वॉच करें पहले। और इस वीडियो को भी थॉरली जब आप वॉच कर लोगे तो इसके बाद इस काबिल हो जाओगे कि इस इंग्लिश लैंग्वेज के टेस्ट को आप 100% एक्यूरेसी से पास कर लोगे। सेकेंड स्टेज पे आपने एक 30 मिनट्स में एक ऐसे लिखना होता है। प्लेलिस्ट में जाके जब आप देखोगे हाउ टू राइट एसेस या ऐसे राइटिंग, उस प्लेलिस्ट में जब जाओगे तो उसमें मैंने बताया हुआ है डिफरेंट वीडियोस में कैसे कैसे राइट करना है। कुछ ऐसे दोस्त जो थोड़े वक्त में टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं है, वो एआई टूल्स का यूज़ करके ऐसे राइट करना चाहते हैं, वो भी उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। उसमें मैंने डिफरेंट वीडियोस में आपको ऐसे राइट करने के टेक्निक्स बताई हुई हैं, ठीक है? उन वीडियोस को वॉच करें, फिर आप टेस्ट की तरफ पूरी तैयारी करने के बाद पूरी तैयारी करके टेस्ट की तरफ जाएं, ओके? तो आज की इस वीडियो को थॉरली जब आप वॉच कर लेंगे तो यकीनन 100% एक्यूरेसी से आप ये टेस्ट भी क्लियर कर लोगे, ओके? चलते हैं टेस्ट की तरफ। इसमें पहला क्वेज है जी। क्वेज नंबर 1, fill the spaces with appropriate adjectival prepositions. I'm delighted to meet you. यहाँ पे क्या आएगा? टू आएगा, ओके? इसको अच्छे से देखते हैं। I'm delighted to meet you. That's quite easy. Okay जी, let's move to the next one. Question number 2, choose the correct missing words in the following sentence. There have been numerous instances in which the media has been accused of conducting the trial of the accused and passing a verdict even before the court reached its judgment, reached and judgment, reached between judgment. इस पे आप देख लें अच्छे से कौन सा ऑप्शन आएगा। reached its judgment, ये आएगा इसमें। reached its judgment, that's quite easy, okay? अच्छे से देख लें, ऑप्शन नंबर 3 आएगा। Okay जी, let's move to question number 3. Choose the correct sound that the following object makes. Window swinging in the wind, rattle, okay? Rattling sound create होती है, तो इसमें क्या आएगा? rattle. That is also very easy. Okay, let's move to the next one. Question number 4. Put the suitable quantifiers as determiners in the blanks. Cherry is so busy. Okay, इसमें that's quite easy. इसमें आप लगाओ कि here cost little. इसमें ऑप्शन आएगा
little time for the other things. Okay, little most many fewer. That would be the best choice here. Okay, this is quite easy. Let's move to the next one. Question number five. Fill the spaces with appropriate adjectival prepositions. Our teachers were all impressed with our performance in the mocks. That seems to be the best choice here. Okay, इसको एक दफा फिर check कर लें. Our teachers were all impressed with our performance in the box. That would be the best choice. Okay. इसमें second option आएगा. Let's move to the next one. Quiz number 6. Complete the missing words by putting the correct future perfect tense. The coach will have chosen the team by tomorrow. This is quite easy. Okay, इसमें ये option number 3 आएगा. Will have chosen. Okay, let's move to the next one. Quiz number 7. Write the correct modal verb in the blank space. If I were you, I would sell this car. I would sell this car. इस पे क्या आएगा? Would आएगा. अच्छे से देख ले. Okay जी. Let's move to the next one. Quiz number 8. Choose the correct missing words in the following sentences. There is no limit to the variety of places that people work in. Compare despite, of course. 2. First one would be the most accurate choice here. Okay. इसको एक दफा फिर देख ले. There is no limit to the variety of places that people work in. Okay, let's move to the next one. Quiz number 9. Write the correct modal verb in the blank spaces. Will you pass the sugar, please? इसमें ये आएगा. This is quite easy. Option number 3 इसमें आएगा. अच्छे से देख लें. Let's move to the next one. Quiz number 10. Choose the correct question tag for each of the following statements. Esther can now manage the company all by herself. Can't she? First option would be the most accurate choice here. So can now manage the company all by herself. Okay, can't she? Okay, this one would be the correct choice. Let's move to the next one. Quiz number 11. Put the suitable quantifiers as determiners in the blanks. We have lived here for many years. For many years. This would be the most appropriate choice. For many years. Let's move to the next one. Quiz number 12. Fill in the blanks with the suitable conjunctions. The clerk was suspended and not allowed to come back to work until further notice. Until, since, unless, yet. Last one would be the most appropriate choice. Okay, let's move to the next one. Quiz number 13. Choose a correct question tag for each of the following sentences. James should visit us before we visit him. James should visit us before we visit him. Should he? Shouldn't he? Shouldn't he? That is the most accurate choice here. Okay. Let's move to the next one. Quiz number 14. Fill in the blanks with the suitable conjunctions. There was no water to drink, yet we had floods. There was no water to drink, yet we had floods. That would be the most accurate choice. Let's move to the next one. Quiz number 15. Complete the following sentences using the correct quantifiers. Nancy is always angry, so she has few friends. Okay, that would be the most appropriate option. Okay, let's move to the next one. Question number 16. Choose a correct sound that the following object makes. Switching on a light bulb. That creates
clicking sound. So second option would be the most appropriate choice here. This is a correct option. Okay, let's move to the next one. Choose the most suitable adverb from the box to modify the adjectives. इसमें आप देखिए कौन सा आएगा, pretty, beautifully, awesomely, likely, and is pretty tall, beautifully tall, awesomely tall, isn't she? इसमें कोई टाइप ऑफ मिस्टेक्स लग रही हैं नहीं हो, इसमें ट्राई करें इसमें से। इसमें ब्यूटीफुली, awesomely, likely सेंटेंस में इसमें मिस्टेक है, टाइप ऑफ मिस्टेक है। एनी हो, कोई ना कोई तो ऑप्शन आपको लगाना पड़ेगा। इसको ट्राई करते हैं। फर्स्ट वन seems to be the better option. ओके, इसको लगा दें। That seems to be the best choice. Okay, success. Quiz number 18. Complete the following sentences below by writing the correct collective nouns. The constellation of stars lit the sky. Friends, constellation, elements, members. Second one would be the most appropriate choice here. Okay, let's move to the next one. Question number 19. Complete the following sentences below by writing the correct collective nouns. The hen did not protect her brood of chicks from the crow. That one would be the correct option. Okay, let's move to the last one. Fill in the blanks with suitable conjunctions. You can come and visit dash, it's convenient for you. Okay, whenever it's convenient for you. You can come and visit whenever it's convenient for you. That would be the most appropriate and correct choice here. Okay, let's check the result. Congratulations. Okay, you have completed this session successfully. ले जी, आपका टेस्ट पास हो गया है। अब आपने सेकंड फेज पे ऐसे राइटिंग के लिए जाना है। आप इन सारी वीडियोस को 3-4 वीडियोस हैं, इनको अच्छे से वॉच करें। प्रॉपरली तैयारी के बाद जब आप टेस्ट की तरफ जाओगे, यकीनन 100% एक्यूरेसी से आप ये टेस्ट क्लियर कर लोगे। सेकंड फेज पे आपने 30 मिनट्स में कैसे लिखना होता है और ऐसे को कैसे राइट करना है, वो प्लेलिस्ट पे जाके आप पहले अच्छी सी वीडियो को वॉच करके तैयारी कर लें। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट।